हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन स्टॉक मार्केट। सो गाइज, आज हम बात करेंगे स्टॉक टिप्स के बारे में। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आपका प्यार और सहयोग आवश्यक है, तो सहयोग दीजिएगा। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। सो गाइज, आज हम बात करते हैं स्टॉक टिप्स के बारे में। फर्स्ट स्टॉक है हमारा बलरामपुर चीनी मिल्स फॉर मल्टीबैगर स्टॉक्स। ओके, बलरामपुर चीनी मिल्स NSE 2.15% with a target price of rupees 465. The current market price of Balrampur Chini Mills is rupees 393.95. 465 का टारगेट है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। बलरामपुर चीनी with a target price of rupees 465. Current market price 393.95. Time period given by analysis is around a year when Balrampur Chini Mills price can reach defined target. Balrampur Chini Mills incorporated in the year 1975 is a mid-cap company having a market capital of rupees 7,994.29 crore. ऑपरेटिंग इन शुगर सेक्टर, एक शुगर कंपनी है ये। बलरामपुर चीनी मिल्स की प्रोडक्ट रेवेन्यू सेगमेंट इंक्लूड अल्कोहल, इंडस्ट्रियल, पावर, बैगेज, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, others for the year ending 31st March 2022. Okay. Okay, financials. For the quarter ended 30 September 2022, the company has reported a consolidated total income of rupees 1,124.83 crore, up 2.76% from last quarter. Total income of rupees 1,094.59 crore and down -7.67% from last year. Same quarter, total income of rupees 1,218.23 crore. Company has reported net profit after tax of rupees -31.99 crore in latest quarter. Okay. Company has Lodha and Company as its auditors. As on 30 September 2022, the company has reported a total of 20 crore shares outstanding. Okay, investment rationales. The brokerage remained positive on the Indian sugar sector. The given favorable regulation, okay, intend towards the survival of the weakest mill. Okay. Okay, promoters FII Holdings. Promoters held 42.42% stake in the company. As of 30 September 2022, while FIIs own 19.07%, DIIs 18.2%. Okay, so guys, Balrampur Chini Mills. Okay, so guys, Balrampur Chini Mills NSE 2.15% with a target price of rupees 465. The current market price of Balrampur Chini is rupees 393. एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है, कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रांग है। ओके, नेक्स्ट स्टॉक। ओके, सो गाइज, नेक्स्ट स्टॉक है सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज NSE -0.85% विथ अ टारगेट प्राइस ऑफ रुपीज़ 1,260. द करंट मार्केट प्राइस ऑफ सन फार्मास्यूटिकल्स industry is rupees 1,000. Current market price 1,000 with a target price of rupees 1,260. Okay, the time period given by analysis is a year when Sun Pharmaceuticals Industries price can reach defined target. Okay, ICICI Direct recommended to keep stop loss at rupees 830. Okay, Sun Pharmaceuticals Industries Incorporated in the year 1993 is a large cap company having a market capital of rupees 2,40,461.35 crore. Operating in pharmaceutical sector, एक फार्मा कंपनी है ये। Okay, recommended ICICI Direct recommended to keep stop loss at rupees 830. Okay,
Sun Pharmaceuticals Industries key product revenue segment include pharmaceuticals and other operating revenue for the year ending 31st March 2022. Okay, financials. Okay, for the quarter ended 30 September 2022, the company has reported a consolidated total income of rupees 11,037.50 crore, up 2.54% from last quarter. Total income of rupees 10,763.90 crore and up 12.07% from last year same quarter. Total income of rupees 9,848.82 crore. Company has reported net profit after tax of rupees 2,260.17 crore in latest quarter. Okay. Company has SRBC and Company LLP as its auditors as on 30 September 2022. The company has a total of 240 crore shares outstanding. Investment rationale. Since quarter 2 2022, significant inflows in the pharma space have been observed, and Sun Pharma was among the best performers in the pack, suggesting accumulation in the stock at lower levels. Okay, currently the stock is trading above ISMAN +1 sigma levels, where the brokerage expect it. Accumulations. Okay, promoters FII Holdings. Promoters held 54.48% stake in the company as of 30 September 2022, while FIIs own 14.95%, DIIs 19.47%. Okay, so guys, Sun Pharmaceuticals NSE minus 0.85% with a target price of rupees 1,260. The current market price of pharmaceuticals Sun Pharma is रुपीज़ 1000. कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है. ओके, नेक्स्ट स्टॉक. ओके, सो गाइस, नेक्स्ट स्टॉक है विथ SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विथ अ टारगेट प्राइस ऑफ रुपीज़ 790. द करंट मार्केट प्राइस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया NSE minus 2.05% is rupees 607. करंट मार्केट प्राइस 607 विथ अ टारगेट प्राइस ऑफ रुपीज़ 790. 790 का टारगेट है. एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करें. कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. ओके, टाइम पीरियड गिवन बाय एनालाइज इज अ ईयर व्हेन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्राइस कैन रीच डिफाइंड टारगेट. ICICI डायरेक्ट रिकमेंडेड टू कीप स्टॉप लॉस एट रुपीज़ 515. ओके, ICICI direct recommended to keep stop loss at rupees 515. Target price 790. Current market price 607. State Bank of India, incorporated in the year 1955, is a banking company having a market capital of rupees 5,47,614.18 crore, operating in banking sector. Okay, State Bank of India key product revenue segment include interest and discount on advances and bills, income from investment, interest on balances with RBI and other interbank funds for the year ending 31st March 2022. Okay, financials. Okay, for the quarter ended 30 September 2022, the company has reported a consolidated total income of rupees 1,14,782.48 crore, up 21.43% from last quarter. Total income of rupees 94,524.30 crore and up 13.49% from last year same quarter. Total income of rupees 1,01,143.25 crore. The bank has reported net profit after tax of rupees 14,752 crore in latest quarter. Okay, 1,01,143.25 crore. Okay, investment rationales. SBI future open interest has come
come down from almost 12 crore shares in the early part of the year to just over 6 crore, while the stock has been largely below rupees 550 levels. Okay, the deliver accumulations near rupees 525 to 550 levels now. Okay, promoters FII Holdings. Promoters held 57.57% stake in the company as of 30 June 2022, while FIIs own 9.62%, DIIs 25.09%. Okay, so guys, State Bank of India with a target price of rupees 790. The current market price of State Bank of India is rupees 607, NSE minus 2.05%. कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है, 790 का टारगेट है। करंट मार्केट प्राइस 607 विथ अ टारगेट प्राइस ऑफ रुपीज 790। ओके, सो गाइज, तो ये थे 3 मल्टीबैगर स्टॉक। ओके, सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार, बोलो राधे राधे।